Hello, welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 12th of January. So, the very first news is the first page. South Africa accuses Israel of genocide in the Palestine, asks UN court to intervene. ये जो न्यूज़ है ये कल भी आई थी that an African nation, named South Africa, has raised a concern in United Nations court against Israel that Israel जो है that is following genocide in the Palestine. So उसी के continuation में ये आज वाली न्यूज़ आई है. So basics उसमें से similar हैं, the basics of Israel-Palestine war and the locations and geographical conditions of South Africa. अभी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुए इस न्यूज़ में कि यूनाइटेड नेशन कोर्ट का क्या रिजल्ट है या वट एवर. सो अभी ये न्यूज़ वही रहेगी जो कल थी. और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके जो साउथ अफ्रीका है, इट इज़ लोकेटेड हियर, दिस इज़ साउथ अफ्रीका. और आपका जो इज़राइल पैलेस्टीन का वॉर है दैट इज़ गोइंग ऑन हियर. ठीक है, चले उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है that is Mamta asks PM to officially list Bengali as classical language. So at present in India there are 6 classical languages जो भी आपकी old traditional languages है, which includes Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. यदि आपके 4 तो प्रॉपर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो गई हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपके जो एंशियंट लैंग्वेज है संस्कृत एंड देन वन लैंग्वेज इज योर ओडिया लैंग्वेज. सो दीज आर योर 6 लैंग्वेजेस, द एरियाज दे बिलोंग टू. उड़ीसा की आपकी ओडिया हो गई है, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है और यहाँ की आपकी जो तेलुगु लैंग्वेज है वो, प्लस आपकी जो वैदिक कल्चर है उससे जो बिलोंग करती है दैट इज योर संस्कृत. नाउ West Bengal Chief Minister asking to make Bengali as a classical language. Okay? And the title of the classical language will be given by the central government. So she has requested the central government for considering Bengali as a classical language. And the reasons she has given for considering Bengali as classical languages are, एक तो ये चीज़ है कि भाई आपकी जो बंगाली लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है, आराम से 2-2.5 हज़ार साल पुरानी है. इसका जो ओरिजिन है दैट कैन बी ट्रेस्ड वेरी वे बैक टू 2500 ईयर्स. दूसरी चीज़ है दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड ग्लोबली एज वेल. दिस इज़ द 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सो शी हैज़ रिक्वेस्टेड. नाउ दिस न्यूज़ माइट गो इन टू कॉन्टिन्यूएशन एंड अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अगर बंगाली लैंग्वेज है वो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, then we will consider it again. Now, the next news is minorities' right to establish administer institutions was not to make them insular according to Supreme Court. So I think this is the third time जब ये news वापस आई है. The context of the news is same. आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये उसका केस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, it is a central institution because the administration in the Aligarh Muslim University is not necessarily made up of minority communities. There are the people of other communities as well. So according to Supreme Court, the Article 30 under the fundamental rights gives the minorities a right to establish their educational institutions. However, there is no such foundation that their administration should belong to minority community only. So case repeat हुआ है and इसमें एक केस मेंशन किया हुआ है, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967. तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि अजीज बादशाह केस जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस न्यूज़ से रिलेटेड है. नेक्स्ट न्यूज़ इज Over a 42-kilometer drive, Atal Setu will reduce Mumbai-Navi Mumbai commute to 20 minutes. एक नया आपका ब्रिज है वो इनॉग्रेट होने वाला है 12th of January को. एंड जो ब्रिज है उसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या फिर इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवा अटल सेतु, नॉर्मली आप उसको अटल सेतु भी कह सकते हैं, and which is going to connect Mumbai to Navi Mumbai directly. Project जो है उसकी cost around 20,000 rupees
एंड इसमें 16.5 किलोमीटर्स का सी ब्रिज है और 5.5 किलोमीटर्स का आपके लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी रहेगी. सो आज इसका इनॉग्रेशन है. आई थिंक टुमारो ऑल्सो दिस न्यूज़ विल बी कवर्ड, सो विल सी दिस न्यूज़ अगेन. After that, Agnipath scheme has been mentioned, so I think this scheme is on repeat. कल भी ये न्यूज़ आई थी in the context of the Gorkhas of Nepal, and similarly आज भी न्यूज़ आपके पेपर में आई है. So the basics of Agnipath scheme are important. उसके बाद सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज़ महाराष्ट्र टॉप्स स्टेट लिस्ट. ये आपकी स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे के रिजल्ट्स हैं एंड फॉर द ईयर 2023. सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे आपकी जो टॉप 5 सिटीज़ हैं दीज आर दीज. इंदौर और सूरत ने क्यूमुलेटिवली आपके फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है. देन वी आर हैविंग नवी मुंबई, देन वी आर हैविंग ग्रेटर विशाखापट्टनम और भोपाल. These are the cities which are having population more than 1 lakh. And in case of the states, Maharashtra, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना. आपने टॉप 5 याद रखने होते हैं. क्वेश्चन बन सकते हैं किसने टॉप किया है, या टॉप 5 आपकी जो सिटीज़ या स्टेट्स जो है वो कौन कौन से हैं. और जो इस स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं दीज आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंदौर जो है दैट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th टाइम. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. एंड अलॉन्ग विद दैट जो अभी सर्वे हुआ है 2023 का, उसकी जो थीम है, थीम्स आर इम्पॉर्टेंट. दैट वाज वेस्ट टू वेल्थ. और फॉर द दिस ईयर फॉर दैट इज 2024 आपका थीम रहेगी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. सो आपने थीम ज़रूर याद रखनी होती है. ठीक है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसी केस में आपके जो स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे है इसमें आपकी कैटेगरीज होती हैं. वन कैटेगरी इज the cities that are having population more than 1 lakh. Then we are having cities with the population less than 1 lakh. For example, in this case, cities with a population of 1 lakh, आपके महाराष्ट्र के 2 cities हैं, सासवाड़ एंड लोनावाला, और छत्तीसगढ़ की एक सिटी है आपके पाटन. इन्होंने टॉप 3 पोजीशन सिक्योर किया है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस. ठीक है. सो अगर कभी कोई रिपोर्ट आती है, कोई सर्वे आता है, कोई रैंकिंग आती है, दीज आर इम्पॉर्टेंट. उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, किसने बेस्ट परफॉर्म किया है, किसने वर्स्ट परफॉर्म किया है, लाइक दिस. उसके बाद स्ट्रेंड टाइज इन द इंडिया मालदीव रिलेशन. भी रिसेंटली आपके मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी चली रही है, जिसमें मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स किए थे. एंड अलॉन्ग विद दिस अभी जो मालदीव्स के हेड हैं वो आपके चाइना टूर पे हैं. एंड हाँ आपके दे आर हैविंग अ मीटिंग विद द चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि दे आर हैविंग स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद इंडिया एंड वेयर सिमिलरली दे आर हैविंग बेटर रिलेशंस विद चाइना. सो इट्स गोइंग टू बी अ जियो पॉलिटिकल इशू. नेक्स्ट इज the stable selection turning into political background. We do not need to go into the political background. The focus is on the table selection. आपके जो रिपब्लिक डे पे परेड्स होती हैं उसमें हर स्टेट का कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है हर साल. सो अभी एक गाइडलाइन आई थी कि आपके हर 3 साल में एक एवरी स्टेट इन यूटी विल हैव अ रिप्रेजेंटेशन. तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में है. सो मेन थिंग इज अबाउट द टेबल्यू प्रपोजल्स कि अब हर 3 साल में एवरी स्टेट इन यूटी विल हैव अ रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड. आफ्टर दैट वी आर हैविंग earthquake rattles अफगानिस्तान. सो अभी कुछ दिन पहले जापान में earthquake आया था. We have studied that. And now अफगानिस्तान में आपकी earthquake आया है. So the basic of earthquake, how earthquakes are generated, the static part of geography is important. Now the next news is Turkey, Bulgaria, Romania joined forces to hunt Black Sea mines. Say यहाँ पे मेन चीज़ आपकी जो है वो ये है कि जो ब्लैक सी है वो आपकी एक इम्पॉर्टेंट रूट है फॉर द ट्रेडिंग एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. सिंस द अटैक ऑफ रशिया ऑन द यूक्रेन, the surrounding nations have become very concerned about the safe passage of ships and all through the Black Sea. So they have been trying to find out the mines in the waters. So यहाँ पे एक तो आपके Black Sea की location. So I think this is Black Sea. You can see that. And ये आपके Black Sea हो गया और it sits in the head of the Turkey. So
ब्लैक सी के साउथ में आपके है टर्की और इसके नॉर्थ में हो गया है यूक्रेन. And on the eastern side, we are having Russia. And with this, we are having Georgia. And on the western side, we are having Romania and Bulgaria. और अभी जो आपकी न्यूज़ है उसमें Turkey, Bulgaria and Romania. So this area. Turkey, Bulgaria and Romania, they are working together for the Black Sea. Okay. Tankers in Gulf of Oman boarded by men in military forms. Tankers in the Gulf of Oman. So this is your Gulf of Oman. Recently हमने देखा था कि जो Red Sea है उसमें आपके attacks हुए हैं by the Houthi rebels. Similarly, the same situation has been seen in the Gulf of Oman. So Gulf of Oman is located here, nearby your Persian Gulf. So the location of Gulf of Oman is important, nearby your Persian Gulf. Now, next news is Maldives, China commit to greater strategic cooperations and sign 20 MOUs. So the same thing, he was on a visit to China and they have signed 20 agreements in multiple fields, which includes, okay, and they are trying to have a better relations. And this comes during India and Maldives conflict. So we'll see what happens. So ये आपके इंडिया और Maldives का conflict था. So he was the Indian Prime Minister was promoting Lakshadweep, and in this context, 3 ministers of Maldives commented on the Indian Prime Minister. So a rift has started between Maldives and India. So the locations are more or less important. This is your India, and Maldives are located somewhere here. This is Maldives. Israel strikes South Gaza as Blinken is in Egypt for talks. This is important. आपके जो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, ही इज़ इन इजिप्ट, और इसी टाइम पे आपके जो इजराइल है दैट इज स्ट्राइकिंग योर साउथ गाजा. सो यहाँ पे आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही इज़ हियर, और आपका जो साउथ गाजा है दैट इज़ लोकेटेड हियर. दिस इज योर गाजा. सो इन द सेम टाइम Israel has attacked in the Gaza Strip. Okay, we are having Mandela support for the Palestinian lives on with South Africa's case against Israel. So the context of the news is the same when the South Africa has filed a case against Israel, as the nation South Africa supports the Palestine, and the support to Palestine dates back to the time of the Nelson Mandela. So that's it. So इस केस में आपके जो अभी केस चल रहा है दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट. पास्ट में इतना अभी जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. And I think this is it for today's newspaper. Thank you.